Welcome to our YouTube channel AG and Aqua. Today we will discuss about the MFSC entrance test in CCS HAU हिसार हरियाणा। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So we will discuss. First question is which of the following fish group is most abundant in swamps? तो ऑप्शन नंबर ए कार्प्स, ऑप्शन नंबर बी कैटफिशेस, ऑप्शन नंबर सी क्लोपिडे, ऑप्शन नंबर डी मुलेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैटफिशेस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द लार्जेस्ट एस्चुराइन इकोसिस्टम इन इंडिया इज। ऑप्शन नंबर ए हुगली मतला, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हुगली मतला, हुगली मतला ईश्वरी। क्वेश्चन नंबर 3 विच फ्रेश वाटर मसल इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेस्ट्रिया कुकुलाटा, ऑप्शन नंबर बी पिंक टाडा फ्यूकाटा, ऑप्शन नंबर सी लैमिडिनस मार्जिनैलिस, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस्टेरिया रिवलेरिश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 4 which type of scales are found in carps? Option number A ctenoid, option number B ganoid, option number C placoid, option number D cycloid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लॉइड, साइक्लॉइड स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 5 रेडुला इज एब्सेंट इन। ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी बाइवोल्विया, ऑप्शन नंबर सी सिफेलोपोडा, ऑप्शन नंबर डी पॉलीप्लाकोफोरा। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी बाइवोल्विया। 6 नंबर क्वेश्चन विच इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए लेक इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिवर इकोसिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर लिप इज फ्रिंज। ऑप्शन नंबर ए कतला कत्ता, ऑप्शन नंबर डी लेबियोरोहिता, ऑप्शन नंबर सी साइनस मृगाला एंड ऑप्शन नंबर डी साइप्रिनस कार्पियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेबियो रोहिता। क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर फिशिंग आर। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज्ड हार्वेस्ट ऑफ टारगेटेड फिश, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस्ड हार्वेस्ट ऑफ टारगेटेड फिश, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस्ड हार्वेस्ट ऑफ टारगेटेड फिश। 9th नंबर क्वेश्चन द कोस्टल फिशरीज इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए बेलुगा, ऑप्शन नंबर बी मैक्रल्स, ऑप्शन नंबर सी टेंच, ऑप्शन नंबर डी स्टेरलेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 10 स्पेसिफाइड एरिया फॉर यूज्ड ऑफ ट्रेडिशनल वेसल्स इन तमिलनाडु इज। ऑप्शन नंबर ए 3 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर बी 5 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर सी 8 नॉटिकल माइल्स, ऑप्शन नंबर डी 10 नॉटिकल माइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 11 अंडर द लॉज ऑफ सी a sea zone over which a state has right to explore and use marine resource is. Option number A offshore zone, option number B deep water zone, option number C exclusive economic zone, option number D fishing zone। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 12 लिटोपिनस विन्नमयी बिलोंग्स टू। ऑप्शन नंबर ए सिफेलोपोडा, ऑप्शन नंबर बी क्रस्टेशिया, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोइडिया, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्टेशिया।
क्रस्टेशिया। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए एर्नेस्ट मायर, ऑप्शन नंबर बी अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनोयस, ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रास्टस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लिनोयस। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फिश पॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए डेफनिया, ऑप्शन नंबर बी मोइना, ऑप्शन नंबर सी आर्सेला, ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 15, चैंग फिशिंग इज एसोसिएटेड विद सेल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए पाइलोग्लोबिशा, ऑप्शन बी जैंकस फाइरम, ऑप्शन नंबर सी पिंक टाडा वल्गैरिस, ऑप्शन नंबर डी डेंटेलियम इंटेलिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैंकस फाइरम। क्वेश्चन नंबर 16, अ पॉन्ड इज अ, ऑप्शन नंबर ए अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ऑप्शन नंबर बी अ बायोम, ऑप्शन नंबर सी अ नेचुरल इकोसिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज द नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ नेचुरल इकोसिस्टम। Question number 17, the sea fishes living close to sea beds are called. Option number A pelagic, option number B demersal, and option number C deep sea fish, and option number D none of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी demersal fisheries. Sepia belongs to class. ऑप्शन नंबर ए मोनोप्लैकोफोरा, ऑप्शन नंबर बी सिफेलोपोडा, ऑप्शन नंबर सी स्कैफोडा, ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रोपोडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिफेलोपोडा। क्वेश्चन नंबर 19, द फिश स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर ए रेयर, ऑप्शन नंबर बी वल्नरेबल, ऑप्शन नंबर सी इंडेंजर्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडेंजर्ड, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेश वाटर शार्क इज, ऑप्शन नंबर ए चन्ना मारुलियस, ऑप्शन नंबर बी वलैगोट्टू, ऑप्शन नंबर सी ओम्पैक पब्दा, एंड ऑप्शन नंबर डी मिस्टस टॉप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वलैगोट्टू। विच कल्चर टेक्निक इज सुटेबल फॉर कल्चर ऑफ सी बास। ऑप्शन नंबर ए पेन कल्चर, ऑप्शन नंबर बी केज कल्चर, ऑप्शन नंबर सी पॉन्ड कल्चर, ऑप्शन नंबर डी फ्लोटिंग रैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केज कल्चर। द लार्वा ऑफ लोबस्टर इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए जोइया, ऑप्शन नंबर बी माइसिस, ऑप्शन नंबर सी फाइलोसोमा, ऑप्शन नंबर डी नेपोलियस। दैट करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी फाइलोसोमा। Question number 23, the eggs of fishes are. Option number A microlithal and extraembryonic membranes absent. Option number B mesolithical and extraembryonic membranes absent. Option number C megalithical and extraembryonic membrane present. Option number D megalithical and extraembryonic membrane is absent. That correct answer is the option number D megalithical and extraembryonic membrane is absent. Question number 24, which is the best fertilizer for fish pond. Option number A phosphorus, option number B nitrogen, and option number C potassium, and option number D is none of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए phosphorus. Question number 25, the larva that occurs in the development of sea urchin is. Option number A Bipneria, option number B Auricularia, option number C Echinoplatus, and option number D none of these. तो इसका करेक्ट आंसर होगा Auricularia, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, which native fish of Indonesia is introduced in India. ऑप्शन नंबर ए टिनका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्फोरोनियस गौरामी, ऑप्शन नंबर सी कैरेसियस, एंड ऑप्शन नंबर डी साइप्रिनस कार्पियो। दैट करेक्ट आंसर इज
Gaurami. Question number 27. Hypophysis is used to. Option number A, induced parthenogenicy. Option number B, increased natural spawning. Option number C, induced spawning artificially. And option number D, none of these. The correct answer is the option number C, induced spawning artificially. Question number 28. Transparent larva of the eel is called. Option number A, Leptocephalus. Option number B, Elver. Option number C, fry. And option number D, fingerling. The correct answer is the option number A, Leptocephalus. Question number 29. Which disease is caused by fish lice in freshwater fishes? Option number A, Gyrodactylus. Option number B, Dactylogyriosis. Option number C, Argilosis. ऑप्शन नंबर डी, इक्थियोपिथेरियसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 30. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल्टिंग इन क्रस्टेशियंस? ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, इकाइडोसोन। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31. ट्रांजिशनल लार्वा स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पर्ल ओयस्टर इज? ऑप्शन नंबर इज ए, स्ट्रैकोफोर। ऑप्शन नंबर बी, वेलिजर। ऑप्शन नंबर सी, पेडीवेलिजर। ऑप्शन नंबर डी, अम्बो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेडीवेलिजर। ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ बंद इज नोन एज? शेरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मोन। ऑप्शन नंबर सी, बुलन। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोन। क्वेश्चन नंबर 33. नॉन एडेसिव फिश एग्स आर मोस्टली? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, पेलाजिक एग्स। ऑप्शन नंबर बी, डिमर्सल एग्स। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, एग्स विद स्टिकी एंड थ्रेड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलाजिक एग्स। नंबर ऑफ रैपिंग ओवा इन द फीमेल गोनैड prior to spawning period is known as? ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, फेकंडिटी। ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर डी, एवोल्यूशन। दैट करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, फेकंडिटी। क्वेश्चन नंबर 35. द वेट ऑफ द गोनैड्स relative to body weight is known as? ऑप्शन नंबर ए, ponderal index. ऑप्शन नंबर बी, मैच्योरिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर सी, गोनेडोसोमैटिक इंडेक्स। ऑप्शन नंबर डी, कोफिशिएंट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोनेडोसोमैटिक इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 36. कंपोजिशन ऑफ ओवा प्रिम इज? ऑप्शन नंबर ए, FSH। ऑप्शन नंबर बी, LHRH। ऑप्शन नंबर सी, GnRH। ऑप्शन नंबर डी, SGnRHA एंड डोपोपेरिडोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन. CIFE इज लोकेटेड एट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज मुंबई. The most common method of correcting the low pH in fish pond is? Option number A, addition of oil cake. Option number B, addition of gypsum. Option number C, liming. Option number D, addition of organic manure. That correct answer is the option number C, liming. Question number 39. Which of the following is submerged weed? Option number A, Eichhornia. Option number B, Pistia. Option number C, Ceratophyllum. Option number D, Azolla. That correct answer is the option number C, Ceratophyllum. Which of the following aquatic insects are most versed in preying upon fry in a fish pond? Option number A, Belostoma. Option number B, Notonecta. Option number C, Nepa. Option number D, all of these.
So this correct answer is the option number D, all of these. Question number 41. A small fish which feed on zooplankton belongs to which trophic level? Option number A, first. Option number B, second. Option number C, third. Option number D, fourth. That correct answer is the option number C, third trophic level. Option number 42. Which is the lentic water body? Option number A, pond. Option number B, spring. Option number C, stream. Option number D, river. That correct answer is the option number A, pond. Which of the following zone in lentic water body receives sufficient sunlight? Option number A, profundal zone. Option number B, limnatic zone. Option number C, benthic zone. And D, none of these. This correct answer is the option number B, limnatic zone. In Goa, fishing is banned during option number A, April 15 to May 31, and option number B, April 15 to August 15. Option number C, June 1st to July 31, and D option is June 15 to July 31. That correct answer is the option number C, June 1st to July 31. Sudden mass death of fishes from oxygen depletion is more likely in option number A, eutrophic lakes. Option number B, mesotrophic lake. Option number C, oligotrophic lake. On option number D, none of these. That correct answer is the option number A, eutrophic lakes. E. coli is used as an indicator organism to determine pollution of water with option number A, heavy metals. Option number B, fecal matters. Option number C, industrial efficient. Option number D, pollen of aquatic plants. That correct answer is the option number B, fecal matter. Question number 47. The association between shark and suckerfish is called option number A, mutualism. Option number B, communalism. Option number C, symbiosis. And option D, parasitism. So that correct answer is the option number B, communalism. Question number 48. Which of the following method is more advantageous to control aquatic weeds in a fish pond? Option number A, manual method. Option number B, mechanical method. And option number C, chemical method. Option number D, biological method. That correct answer is the D, biological method. Stanley Reservoir is also known as option number A, Bhavani Sagar. Option number B, Sathnur. Option number C, Aliyar. Option number D, Mittur. The correct answer is the option number D, Mittur Dam. Question number 50. Which of the following is a major reason for algal bloom? Option number A, soil erosion. Option number B, contamination by pathogen. Option number C, presence of heavy metals. Option number D, eutrophication. This correct answer is the option number D, eutrophication. 15. Oxygen depletion occurs mostly in ponds due to the abundance of option number A, bacteria. Option number B, insects. Option number C, macrophytes. Option number D, gastropods. This correct answer is the option number C, macrophytes. Question number 52. Pyramid of energy in a pond ecosystem is always option number A, linear. Option number B, irregular. Option number C, inverted. Option number D, upright. This correct answer is the option number D, is the upright. Question number 53. The largest brackish water lake in India is option number A, Wular Lake. Option number B, Sambar Lake. Option number C, Kobar Lake. Option number C, Chilka Lake. This correct answer is the Chilka Lake. Which following led to the extinction of more than 200 species of cichlid fish in the lake Victoria of Africa? Option number A, African catfish. Option number B, dogfish. Option number C, Nile perch. Option number D, ribbonfish. This correct answer is the option number C, Nile perch. Question number 55. Freshwater fish
Option number A, drink water continuously. B, gain water by osmosis. Option number C, lose water by osmosis. Option number D, heavy salt glands to remove excess salts. This correct answer is the option number B, gain water by osmosis. Question number 56 is the Minamata disease was caused due to the consumption of. Option number A, fish contaminated with cadmium. Option number B, fish contaminated with mercury. Option number C, fish contaminated with selenium. And D, none of these. This correct answer is the option number B, fish contaminated with mercury. Question number 57, which of the following fish lays adhesive eggs? Option number A, Katla, and option number B, Cyprinus carpio. Option number C, Tingofaridon adla. Option number D, Hypothalamic molitrix. This correct answer is the B, Cyprinus carpio. And question number 58, flow of energy in an ecosystem is. Option number A, unidirectional. Option number B, bidirectional. Option number C, multi-directional. And option number D, none of these. This correct answer is the option number E, unidirectional. Question number 59, the headquarters of National Institutes of Oceanography is located at. Answer is the Goa. The treatment of the fish with salt is called. Option number A, brining. Option number B, smoking. Option number C, canning. Option number D, drying. This correct answer is the option number A, brining. Question number 61, which of the following is major component of fish food? Option number A, lipids. Option number B, proteins. Option number C, both A and B. And option number D is the carbohydrates. This correct answer is the option number A and B, lipid and proteins. Question number 62, the most efficient gear used along the Karnataka coast is. Option number A, Rampani net. Option number B, beach seine. Option number C, scoop net. Option number D, doll net. This correct answer is the option number A, Rampani net. Which of the following are active fishing gears? Option number A, traps. Option number B, seines. Option number C, hooks. And option number D, gill net. This correct answer is the option number B, seine nets. Question number 64, which of the following are non-mechanized fishing crafts? Option number A, doll netter. Option number B, musula boat. Option number C, gill netter. Option number D, trawlers. This correct answer is the option number B, musula boats. Question number 65, which fishery institute is engaged in research relating to fishing and fish processing? Option number A, CIFE. Option number B, CIFT. Option number C, SIBA. And option number D, SIFA. This correct answer is the 65. If is B, CIFT, Central Institutes of Fisheries Technology. Question number 66, an imaginary line joining the points of equal elevation is called as. Option number A, crest. Option number B, freeboard. Option number C, contour. Option number D, drop. This correct answer is the option number C, contour. Question number 67, which net is used for Bombay duck on Gujarat? Option number A, gill. Option number B, doll net. Option number C, trammel net. Option number D, trawl net. This correct answer is the option number B, doll net. Question number 68, isinglass is obtained from which part of fish? Option number A, gills. Option number B, air bladders. Option number C, fins. Option number D, livers. This correct answer is the option number B, air bladder. Question number 69, which are the positive attributes of use of synthetic fibers for fishing gears? Option number A, highly biodegradable nature. Option number B, high absorption resistance. Option number C, both A and B. Option number D is none of the above.
This correct answer is the option number C, both A and B. Question number 70. Application of gypsum in a pond corrects the option number A, pH, option number B, turbidity, option number C, alkalinity, and option number D, hardness. This correct answer is the option number D, hardness. Which of the following is the demerits of FRP fishing vessels? Option number A, lightweight, option number B, higher initial cost, option number C, high weathering resistance, option number D, impervious to moisture. This correct answer is the 71 is the B, higher initial cost. Question number 72. Which of the following is the conventional boat building material in India? Option number A, wood, option number B, steel, option number C, ferro cement, option number D, fiberglass reinforced plastic. This correct answer is option number A, wood. Trammel net is a option number A, single layer gill net, option number B, 3-layer gill net, option number C, bottom set fin gill net, option number D, all of these. This correct answer is the option number B, 3-layer gill net. Question number 74. Crude oil from which of the following fish is used as a preservative for boats against weathering? Option number A, sharks, option number B, rays, option number C, sardine, and option number D, tunas. This correct answer is the option number C, sardines. Question number 75. Which of the following gear is used to exploit tunas from the Indian coastal water? Option number A, draft gill net, option number B, travelers, option number C, Persian, option number D, trolling. This correct answer is the 75 is A, drift gill net. Question number 76. Fishing nets lost in the ocean but continue to capture and kill fish are called. Option number A, trawl nets, option B, ghost nets, option number C, waste nets, option number D, drift nets. This correct answer is the ghost net. Liver oil of which fish have least percentage of vitamin A? Option number A, cod, option number B, halibuts, option number C, tunas, option number D, hammer-headed fish. This correct answer is the option number A, cod fishes. Which is not a surmi based product? Option number A, cambaco, option number B, crab sticks, option number C, bacasso, option number D, tomle. This correct answer is the option number D, tomle. Question number 79. Fish meal is prepared from the processing of option number A, discarded parts of the fish as gut, public gills and fins, option number B, species of small size, option number C, species which are not popular, option number D, all of these. That correct answer is the option number D, all of these. Question number 80. In which state shrimp production is maximum? Option number A, Tamil Nadu, option number B, Andhra Pradesh, option number C, West Bengal, option number D, Goa. This correct answer is the option number A, Tamil Nadu. Dorsal fish erosion in fish is due to the deficiency of option number A, histidine, option number B, lysine, option number B, C, tryptophan, option number D, leucine. This correct answer is the option number B, lysine. BOD of river water is found very high. This means water. Option number A is clean. Option number B is highly polluted. Option number C, contain algae. Option number D, contain many dissolved materials. This correct answer is the option number B, is highly polluted water. Question number 83. In MAP for the white fish and shrimp, which ratio of CO2, nitrogen and oxygen give the best result? Option number A, 20:30:40. Option number B, 40:30:30. Option number C, 50:30:20. Option number D, 70:20:10. This correct answer is the option number B, 40:30:30.
eutrophication is option number A, excessive oxygen in ponds, option number B, abundant fertilizers in the pond, option number C, lack of algae in the ponds, option number D, abundant plankton in the ponds. This correct answer is the option number B, abundant fertilizer in the ponds. Most effective method of extension education is option number A, mass awareness program, option number B, formal education, option number C, informal education, option number D, ranching program. This correct answer is the option number A, mass awareness program. Which of the following organization is providing financial support to fishery sector? Option number A, EIC, option number B, CIFT, option number C, NABARD, option number D, CMFRI. This correct answer is the option number C, NABARD. Fisheries Extension Unit in India was started at option number A, CMFRI, option number B, CIFA, option number C, CIFRI, option number D, CIFE. This correct answer is the option number C, CIFRI. A systematic gathering of information on fish availability using ecosounder is option number A, benthic survey, option number B, aerial survey, option number C, acoustic survey, option number D, none of these. This correct answer is the option number C, acoustic survey. Question number 89. Which of the following is the application of remote sensing in fisheries? Option number A, provide data on fishing gear. Option number B, identifying potential fishing zone. Option number C, detection of fish disease. Option number D, all of these. This correct answer is the option number B, identifying potential fishing zone. 90. Which is the primary cause of spoilage of fish? Option number A, bacteria, option number B, fungus, option number C, protozoa, option number D, virus. This correct answer is the option number A, bacteria. Which of the following post-harvest activities are carried out by fisherwomen? Option number A, unloading and sorting of fish catch. Option number B, carrying diseased fish. Option number C, helps in transportation. Option number D, help in marketing. This correct answer is the option number A, unloading and sorting of fish catch. The vitamin which is important in modulation of immunity is option number A, vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin K. This correct answer is the option number C, vitamin C. Which of the following is the reason for the declining export trade in fishery? Option number A, disease and detection of antibiotic residues in fishes. Option number B, less produce. Option number C, non-availability of desired species. Option number D, seasonal variation. This correct answer is the option number A, disease and detection of antibiotic residues in fishes. Question number 94. In intellectual property, which secure creative of intellectual creations? Option number A, patents. Option number B, geographic indication. Option number C, copyright. Option number D, trademark. This correct answer is the option number C, copyright. Question number 95. Women are involved in which of the following stages of commercial hatcheries and nursery operation? Option number A, brood fish selection and transfer, weighting of brood fishes and induced breeding. Option number C, packaging and freight transportation. Option number D, all of these. The correct answer is the all of these. The Indian edible oyster is option number A, Parna virades. Option number B, Crostaridia madransis. Option number C, Varuna literata. Option number D, Sepia aculata. This correct answer is the option number B, Crostaridia madransis. Question number 97. Most efficient gravity type aerators for fish farming. Option number A, surface type. Option number B, paddle wheel type. Option number C, cascade types.
option number D compressor type. This correct answer is the option number C, cascade types. Question number 98. In computer technology, RAM stands for random algebraic memory. Option number B, random access memory. Option number C, random available memory. Option number D, real areal memory. This correct answer is the random access memory. Question number 99. Which river system is the original habitat of IMC? Option number A, Indus river system. Option number B, Brahmaputra river system. Option number C, Ganga river system. And option number D, Narmada river. This correct answer is the option number C, Ganga river system. Last question is the azolla is rich in protein content with high level of option number A, leucine. Option number B, isoleucine. Option number C, cysteine. Option number D, lysine. Option number D is the correct answer, lysine. Thank you.